To say goodbye is always difficult. To see someone leave is always painful. To not be able to stop them and look back is hurtful. But today's lesson, a farewell, is a bit different. A poem by Alfred Tennyson that will analyze and will have the explanation as it talks about a farewell of people leaving this world. So it starts with the natural scenery as we have read in other poems. We see the natural surrounding, usually the sea, water, rivers, streams. So the poet uses the natural surrounding or natural objects to explore nature through symbolism. He uses the symbols to represent abstract ideas. तो हम देखते हैं टेनिसन की पोम्स में ज्यादातर नेचर का यूज होता है और वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे पानी जो है सी रिवर स्ट्रीम इट रिप्रेजेंट्स लाइफ जिंदगी को सिंबलाइज कर रहा है सो इट्स स्टार्टिंग विद द वर्ड फ्लो imperative word flow down cold rivulet to the sea thy tribute wave deliver no more by thee my steps shall be forever and forever. So flow down, you cold stream, and deliver yourselves to the sea. Thy tribute wave deliver. So this is almost like a tribute that delivers you to the sea. Now here we see the symbolism as the poet is bringing out the theme of death. Flowing down, this life rivulet is that individual life that goes on and then mixes with the sea, the bigger life, the bigger picture of life. Your tribute wave delivers. So this tribute or this funeral is delivered. We are moved towards the sea, towards that eternal life through that last farewell, the funeral. तो इंसान जो है वो जब समंदर करता है काशी एक परमानेंट लाइफ की एक मुस्तकिल जिंदगी की तो ये छोटी जिंदगी जो है हमारी ये हम जैसे लोग हमें मौत के बाद रिश्तेदार जो है वो हमें दफना देते हैं तो वो एक तरह का एक ट्रिब्यूट है और व्हाट्स अ ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट मीन्स an act intended to show respect and gratitude. तो एक फराजी तहसीन जो आखिर में पेश की जाती है वो एक दायमी जिंदगी की तरफ हमारा एक सफर होता है No more by thee my steps shall be forever and forever. अब ये रिवर को कह रहा है सी को कह रहा है तुम्हारे किनारे पे मेरे जो फुट स्टेप्स हैं वो अब कभी नहीं आएंगे So never again. Flow softly, flow by lawn. Again, starting with the same word. कि चलते जाओ, flow होते जाओ, softly flow by lawn and lee. अब lawn and lee fields. देखिए इसमें alliteration है, the L word, L sound. A rivulet, then a river. और ये अब जिंदगी के मराहिल हैं जब rivulet is a small body of water. ये रिवर से छोटा है और ये फिर आगे जाके रिवर में तब्दील हो जाता है और फिर रिवर से आगे सी यानी डेथ सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ लाइफ फर्स्ट a child young age then it ages and then it moves on nowhere by thee my steps shall be forever and forever so flow gently through fields and meadows from stream to river you will not see my footsteps never again और फिर ये हमें लाइन ऑफ रिफ्रेन रेपिटेशन ऑफ द सेम लाइन हमें यहाँ पे मिलती है सेकंड स्टैंजा में
But here, your elder tree will sigh. Elder tree is the name of a tree that will sigh, जो सांस लेगा, एक आह भरेगा. Time is yours. तुम्हारे दरख्त जो दरख्त किनारे पे हैं उनके वहां पे वो साय करेगा. एंड हेयर थाइन एस्पेन शिवर. और यहाँ पे एस्पेन ट्री जो है वो शिवर करेगा, हिलेगा, क्योंकि एस्पेन को अक्सर एसोसिएट किया जाता है शिवरिंग के साथ, कि इट्स अ शिवरिंग ट्री. क्योंकि इसमें से ऐसे जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो इसमें से आवाज आती है. तो इट appears as if it's shivering or spinning. And hereby thee will hum the bee forever and forever. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे auditory image sigh और humming of the bee है. और ये मैं आपको दिखाती हूँ aspen tree. These are aspen trees. No, these are alder trees, a tree of the birch family. और ये symbolize करती है strength, protection, determination, confidence. It's a sign of safety and protection. दूसरे trees हैं aspen trees. They make sounds of rain in the presence of the wind. It symbolizes selflessness. So as he says that they will sigh and the tree will shiver, and hereby thee will hum the bee. और जो bees हैं वो humming की आवाज आती है जब bees buzz करते हैं. Forever and forever. जैसे कि जब इंसान जा रहा है और लोगों की एक हमिंग की आवाज आ रही है. एंड फिर यही लाइन रिफ्रेन की यूज हो रही है, forever and forever. 1,000 suns will stream on thee, 1,000 moons will quiver, but not by thee my steps shall be forever and forever. So 1,000 suns, यहाँ पे hyperbolic का यूज हुआ है, यानी कि exaggeration यूज कर रहा है. 1,000 suns आएंगे जो कि शाइन करेंगे तुम्हारी स्क्रीन पर. 1,000 moons आएंगे जो कि क्विवर करेंगे, शिवर करेंगे, कांपेंगे. यानी जब लहरें आती हैं पानी की तो वो ऐसा लग रहा है मून जो है वो शिवरिंग कर रहा है. बट नॉट बाय थी माई स्टेप्स शैल बी फॉर एवर एंड फॉर एवर. So 1,000 suns will shine on you, 1,000 moons will shimmer, but you will not see me by your side, never again. So we see the poet here is actually telling about the brevity and insignificance of human life. Nature continues the way as though it was unaffected by our death. जैसे कि सारी चीजें, सन है, मून है, वो उसी तरह आ रहे हैं, ट्रीज उसी तरह होंगे, bees will be buzzing. So nature does not appear to be affected. नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता. रिवलेट्स जो हैं जिंदगियां आती जाएंगी और रिवर में और समंदर में तब्दील होती जाएंगी. और नेचर जो है, we have to become one with nature. Becoming one with the nature is the only means by which peace and satisfaction is achieved. और जिंदगी जो है, दुनिया जो है, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी जबकि इंसान फेयरवेल कह के चला जाएगा. इसलिए आप देखते हैं रेपिटेशन ऑफ दीज लाइन हर स्टैंजा में ही आ रही है, फॉर एवर एंड फॉर एवर. So the poet using the metaphor of the river, और इसमें hyperbole का यूज हुआ है. और personification कहाँ पे इसमें आई है, हम देखते हैं personification. ये देखें, trees are sighing, आह भर रही हैं, दरख्त आह भर रहा है या शिवर कर रहा है. This is personifying the trees here. और यहाँ पे एनाफोरा का यूज भी हुआ है. एनाफोरा मीन्स एड्रेसिंग कि your trees, thine aspen tree, thine elder tree,
and here by thee और तुम्हारे किनारे पे bees भी humming करेंगे. These are all examples of anaphora. So this was the poem by Alfred Tennyson. ये line of refrain है और structure of the poem क्या था, quatrains है, 4 stanzas with the rhyming scheme A B A B. This sums up our video on farewell, a farewell by Tennyson. Hope you like it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.